Hello everyone, this is Shivangi Tiwari from Smart Step Classes, and guys, today we are going to discuss about the admission procedure in Canada and how you can get the PSW, that is Post Study Work Permit, for 3 years. So guys, as you know that in Canada there's a rule that if you study for 1 year, you'll be getting the PSW for 1 year, and if you're studying for a program which is more than 16 months or it is of 2 years, then you'll be getting the PSW for 3 years. So basically it is a calculation of 1 plus 1 and 2 plus 3. So 1 ईयर के कोर्स में आपको 1 ईयर का वर्क एक्सटेंशन मिलता है और 2 इयर्स या 16 मंथ के कोर्स के लिए आपको 3 इयर्स का वर्क एक्सटेंशन मिलता है. बट एट टाइम इट इज फाउंड कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि यार मुझे ये पूरा प्रोग्राम फॉर 2 इयर्स नहीं करना है. आई रियली डोंट वांट टू परस्यू द सेम प्रोग्राम फॉर 2 इयर, बट आई वांट द वर्क परमिट फॉर 3 इयर्स. हाउ कैन यू डू दैट? So let's suppose if you have done your bachelor's and if you are applying for the post-graduation diploma or certification program, you can apply for 1 year program. So let's suppose you are applying for the human resource management, PG diploma in human resource management. After completing 1 year, it has the allowance, you are still eligible to apply for the second program. सो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 1 ईयर का कोर्स लेके जाएंगे तो 1 ईयर का वर्क परमिट ही मिलेगा. अगर आप 1 ईयर का कोर्स लेके जाते हैं सो यू कैन गेट योर सेल्फ एडमिटेड इनटू द सेकेंड कोर्स फॉर 1 ईयर. और अगर 1 कोर्स प्लस 1 कोर्स विच ड्यूरेशन इज 1 ईयर फॉर ईच प्रोग्राम, स्टिल यू विल बी एबल टू गेट द PSW फॉर 3 ईयर्स. सो जरूरी नहीं है कि आप यहीं से 2 ईयर्स का कोर्स प्रोग्राम लेके जाएं. अगर आप वहां जाके भी 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स लेते हैं, so you will be having a range of employability. So अगर आप 1 program लेके जाते हैं, so obviously you will be able to work into that only sector. But let's suppose if you are doing 1 program or completing 1 program in 1 sector, that is human resource, and you're picking the second program as a marketing analytics, so you will be having the eligibility to apply for 3 years of work permit. And then you can get your employability in both the sectors. One is human resource and second is the marketing analytics. So don't worry while applying, right, choose your counselor right so that they can help you in building your profile in the desired form. Thank you.